my life, tide has always been against me, and believe me, it is very tough when tide is against you. But at the same time, it provides you opportunity to learn how to swim. And once you learn it, life is sorted. Hi guys, I'm Suman Roy, and I'll share my experiences with you. My father expired when I was in 7th standard, and the world suddenly turned upside down. Sense of security was completely missing, and I along with my brothers were in hostel, and now we needed to come back to the hometown and take admission in the hometown school. There was a very prestigious school, but getting admission there was very difficult. And at that point of time, family was mourning. The state of mind was very, confused and very sad. So I thought, what to do about it. Now, since I was pushed by the life to take lead, so I thought, why not give it a shot? I thought to meet the principal directly of the school and talk in details with her. I met her. I explained her the situation. I gave her all the details, what all happened and what are my plans, what are my aspirations and everything. And somehow it worked. तब मैंने रियलाइज़ किया कि अरे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो रीच आउट टू द अथॉरिटी, रीच आउट टू द डिसीजन मेकर, एंड आपको फ़ायदा होना ही है, आपका काम होना ही है, एंड दिस विल सर्टेनली हेल्प यू in doing or achieving what you plan to. Now schooling हुआ and childhood progressed. After +2, as others were doing competitive exams, I also started preparing for medical की तैयारी की. उसमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो तैयारी में 2-3 साल बर्बाद किया. फिर समझ में आया कि ये अपने बस का नहीं है. देन डिड ग्रेजुएशन एंड देन डिस्कवर्ड कि MBA बोल के भी कुछ होता है, देन डिड रिसर्च अबाउट इट. उसके बारे में पता किया एंड पढ़ा एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देन आई थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट. Now getting admission in the premium institutes of the country was difficult for me. Then I thought what to do. I selected a college which was very good in academics, which focused in academics a lot, had a very good industry interface. I thought, यार अगर मुझे अच्छे से पढ़ा दिया जाए, if I learn the skill set, then rest I can do on my own. I started MBA program, and I had at the back of in my mind कि given the family circumstances and all, now this is my last option. इस बार जो है कुछ कर गुजरना है. एंड फिर स्टार्ट हुआ पढ़ाई. Believe me, I used to participate in all the clubs, in all the committees of the program, be it corporate committee, alumni committee, cultural, sports, everywhere I used to be present. I used to take responsibilities. I used to lead the committees. And what really hard, if I recall now, so it was like almost 15 to 18 hours a day I was involved in preparing either for the classroom exercise or outside the classroom exercise. And this really helped me in immense learning. प्रोफेसर्स के पास जाना, गाइडेंस लेना, जितना हो सके मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करके अपने आप को, अपने नॉलेज को एनहेंस करने का ट्राई किया. एंड in this entire process, somehow things started turning in my favor. Professors started liking me, giving me the references of case studies and all those things that happen in MBA. And I actually learned a lot in my MBA program thanks to the professors and all. So I realized skill set alone won't help. I need a good network also, good corporate network which will help me in different phases and which will help me in growing exponentially. I observed that this institute has a 20 years legacy. So I thought, why not build the alumni network? काम tough था because 20 साल का network तैयार करना was a Herculean task, but I thought शायद ये हो सकता है. I discussed with friends and all. I discussed with management also. Somehow the management was positive. Some of the friends said, yeah, you are wasting your time. It is not possible. You should not do all this. Focus on your job. Focus on your career. But
I was clear that I need a good network. I started working towards it. Alumni से जाके मिलना, email करना, chat करना, मतलब I tried all that I can do. Plan for them. I strategize कि why will they come to me? Why will they come to institute? What is that they need? What the institute need? Then after evaluating all these, I tried and I reached out to all these guys, and it started working. People started showing interest. धीरे धीरे लोग जुड़ते गए. हर एक जिससे भी मिलता था, उसके सीनियर जूनियर, उसके गर्लफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड, जितने भी बैच के डिटेल थे, सारे डिटेल्स निकलवाता था एंड एग्रेसिवली उसको फिर फॉलो अप करता था. रिगोरस फॉलो अप, सुबह शाम दिन रात जब मौका मिले तो एलुमनाई के पीछे पड़ जाओ. एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट. नाउ ये सब करते करते MBA प्रोग्राम ओवर हो गया, एंड ये सब करते करते समहाउ जो है इम्प्रेशन एक अच्छा बन गया प्रोफेसर्स के बीच में. एंड इन माय कॉलेज आई मेट अ प्रोफेसर who was an advertising professional, and he did wonders in advertising. and उनके संपर्क में आके मेरा इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई हुआ एडवर्टाइजिंग को लेके. Now what happened that during placement he recommended me to an agency, and this is how I got the first job, and you can say maybe the reward of whatever I did in college. Now I was very happy कि मुझे ड्रीम इंडस्ट्री में जॉब मिल गया. मैं थोड़ा सीख भी चुका हूँ एंड मुझे अच्छा काम करके बहुत अच्छा करना है, एंड आई नीड टू डू दिस एंड दैट इन लाइफ. नाउ सी व्हाट हैपेंस. आई गो टू द ऑफिस, get introduced, and in few weeks I get to know कि यहाँ जो एक सीनियर अथॉरिटी हैं, सीनियर पार्टनर हैं, ही इज़ मूविंग ऑन. एंड उनका काम जो था, उनका काम रिलेटेड टू क्लाइंट मैनेजमेंट था, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, न्यू बिजनेसेस था, एंड आई वाज सपोज टू रिपोर्ट हिम. सो जब वो मूव ऑन वाली बात हुई तो सडनली मेरे ऊपर से गाइडेंस ही हट गया. नाउ आई वॉज इन अ वेरी कंफ्यूज्ड एंड वेरी chaotic स्टेट. क्लाइंट को क्या चाहिए मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम अ न्यू ज्वाइनी देयर. ऑफिस में काम कैसे होता है मुझे ज़्यादा पता नहीं, बिकॉज वहाँ पे मेरा बॉस ही नहीं है. लोग जो है पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मे बी XYZ रीजन्स. नाउ आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, एंड क्लाइंट का फ़ोन बार बार इस डिलीवरेबल्स के लिए, ये प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है. तो आई वॉज कम्प्लीटली कंफ्यूज व्हाट टू डू. Now see the situation. I was recommended by a professor who likes me a lot. I am his favorite student, and he reposed faith in me. अगर मैं यहाँ से बैक आउट करता हूँ तो he will also be let down. कॉलेज में भी एक इम्प्रेशन जाता है नेगेटिव. अब मैं करूँ क्या? पॉजिटिव साइड ये था कि लोग यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट थे, वो उनको काम आता था. तो आई हैड दैट इन माइंड कि काम सीखने का अच्छा मौका है. Now, since the partner was moving on, it was very chaotic and I was very confused. Then I decided no, I'll stay here. मैं यहाँ stay करूँगा, धीरे धीरे सबका गाइडेंस लेके काम सीखूँगा and will pull it through. Now, my job started, work started, and धीरे after reading hundreds of mails of the past and reaching out to colleagues, reaching out to client for personal guidance, I showed my appetite, and I tried to manage team whatever way which I can. It was a very small agency, so कभी ऑफिस बॉय नहीं आए, किसी को चाय ना मिले तो सब हल्ला करें और काम ना करें. तो at times I used to make tea for them कि भाई खुश रहेंगे, काम करेंगे ये. Now this is how I built rapport, I built friendship with them. People started liking me, people started helping me, and I used to put long hours again here. And every day I used to reach office at 9:30, and at 12 in the midnight or 1 a.m. in the midnight I used to go, and again the same story next day. So I sweat profusely here. I tried my best, I gave my best. Whatever politics I learned, I tried to apply it in a positive way. I tried to build rapport, I tried to learn, and but after doing all this, a year passed.
A year passed, and I faced a big challenge that till now whatever I was doing was the ongoing jobs of the client, ongoing campaigns and all. This time a mega project came, a mega launch with a celebrity, and I have never done that before. Now you imagine my situation. मुझे उनके प्रोसेस प्रोटोकॉल, उनकी तैयारियां, उनके रिक्वायरमेंट मुझे पता नहीं था. Now how to do it? Again same thing. Try to learn with the help of colleagues, with the help of mentors, with the help of clients. किसी तरह slog करके I prepared for this mega launch, and it went successfully. And now this boosted my confidence. अगर मैं उस समय बैकआउट कर जाता तो कभी सोच भी नहीं पाता कि इतना अनरीजनेबल चीज़ें कर सकता हूँ या ये पॉसिबल है. आई कैन टर्न द टाइड इन माय फेवर. ये रियलाइजेशन मुझे फाइट करके यहाँ से आया एक बार और, कि अगर ग्रिट है एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि ये करना है तो वो हो जाता है. एंड माय फेवरेट कोट इज इट इज़ डूएबल. सो माय फर्स्ट stint after MBA gave me an entrepreneurial experience. Almost every department, every team I used to work with, handling almost everything. वो बिजली का बिल से लेके whatever needs to be taken care of, हर जगह दिमाग लगाना पड़ता था, and that proved to be a blessing in disguise. Now after this firm I worked with couple of agencies. कहीं हमने 4-5 साल काम किया, फिर किसी दूसरे एजेंसी में गया. तो इसी बीच क्या हुआ कि एक जगह जहाँ मैंने काम किया था वहाँ somehow I built a good reputation among the management, among the team members, and overall it was a soul satisfying experience. Now when I was working with some other firm, one day I thought that I should talk to the partner of a particular agency. There is a scope of partnership, and ये एडवर्टाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा मुझे ले गया उनके पास. एंड फिर somehow it materialized, and मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया. नाउ बहुत अच्छा जर्नी चल रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप सही चल रही थी. एंड आई रियलाइज्ड समहाउ कि स्टैटिक क्रिएटिव का टाइम थोड़ा सा पुराना हो रहा. नाउ डिमांड थोड़ा सा कम है. तो आई थॉट व्हाई नॉट मूव इनटू डिजिटल. देन आई स्टार्टेड डिजिटल सर्विसेज, एंड कंटेंट वाज बूमिंग. सो आई स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस. एंड ये स्टार्ट करने से क्या हुआ कि जो क्रिएटिव एजेंसी वाला काम था, which was not in great demand, it was complemented with a unique approach, and that is the production house. इंडिया में बहुत रेयर एजेंसी हैं जिनके अपने इन हाउस प्रोडक्शन हाउस हैं. तो इससे क्या हुआ कि स्ट्रेंथ बढ़ गया. When at the same time our firm got strengthened. Our firm got a sort of power to influence customers, and इसका फायदा हमें मिलने लगा. And once again something which I thought is possible started taking shape. अब प्रोडक्शन हाउस काफ़ी अच्छा चलने लगा. इनफैक्ट इट इज़ लीडिंग द बिजनेस एट आवर फॉर्म नाउ. एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, एंड देन सडनली दिस लॉकडाउन एंड कोरोना थिंग हैपेंड. नाउ एवरीथिंग वाज शट, एज यू ऑल नो, एज यू ऑल आर अवेयर. बट बिलीव मी, इट नेवर केम टू माई माइंड कि अब बिजनेस नहीं मिलेगा, या टीम साइज रिड्यूस करना पड़ेगा, या यू हैव टू टेक सम स्टेप्स बैकवर्ड्स. ये कभी दिमाग में आया नहीं. हमेशा यही दिमाग में आया कि कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो तरीका होगा, and I realized there are businesses which will need advertising. There are businesses like app business, there are businesses like network marketing. उनको business चाहिए होगा. Then I started tapping those guys through some network, through some connections, some alumni network or some client connections, and
and we did a pitch to an app company, and it was a mega pitch, and it was for the global account for that app. And in the lockdown we closed that business. Perhaps in the lockdown we are the first agency जिसको कि business मिला. And once again, सबका confidence, अपना confidence, team का confidence, it swelled. Now since we got one, we went to other, again that network marketing firm. We were pitching. I was very sure that their business will grow because Corona brought joblessness. So network marketing is something which you can do while at home also, and you don't need much qualification and all, much technical requirement भी नहीं है. तो इससे क्या हुआ कि वो धंधा भी हमें मिला, एंड हम लोगों ने उसको सील किया. एंड दिस द अनदर बिजनेस दैट वी गॉट इन लॉकडाउन, एंड we survived well, and we didn't sack anybody. Rather, we hired in lockdown and in the corona phase. We tried to help people as well with the job and all. And this is how I managed to survive in the lockdown. Definitely with the team's help, but yes, this was something which again boosted my belief that it is doable. Thank you guys. Hope you enjoyed. Thank you, and thank you TEDx for the opportunity. Thank you TEDx FIIB 3.0.